Start. Okay, fine. So all of you have to come to this website called Overleaf. Okay. Once you come to Overleaf, what you have to do is you have to click on. Now, first time if you are there, you have to register. Since I already have my username password, I will use it. So once you log in, you should start seeing this kind of uh, front UI. Click on the new project. Go to the last option, which is not seen over here, but that is all templates you can see. And then you have to look for something called as IEEE. Click on view all, and now you have to look for IEEE. You can choose journal or conference. I generally go for journal template, official one. And now you have to click on open as template. ये सब लोगों को करना है. उसके बाद यहाँ पे डायरेक्टली पीडीएफ बन के आ जाएगी आपके पेपर की, जो अभी के लिए बेयर बोन पीडीएफ है, उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन है ही नहीं. ठीक है. नाउ यू हैव टू डबल क्लिक ऑन योर टाइटल. सो हियर इट विल टेक यू टू मेक टाइटल. उसके ऊपर टाइटल की इंफॉर्मेशन आपने भरी होती है सारी. ये सारा कोड है. जो ग्रीन में है वो कमेंटेड कोड है, जिसको यूज नहीं करना है. यू कैन रीड दैट टू लर्न, बट मोस्टली जो कोड है वो ब्लैक में होता है. सो ये जो ब्लैक में है ये उसका कोडिंग है, और ब्लू में जो है वो उसके कमांड्स. सो बेयरमैन डेमो ये जो है ये इस जर्नल का पेपर टाइटल है, लाइन नंबर 360 पे, जिसको मैं करूंगा लेट से निनाद पेपर. ठीक है. एंड इफ यू रिकम्पाइल, इट शुड ऑटोमेटिकली अपडेट दिस टू निनाद पेपर. यहाँ देख रहे हो पीडीएफ अपने आप चेंज हो. तो आपको अभी जो सबमिशन है टाइटल चेंज और एब्स्ट्रैक्ट का, वो इस पीडीएफ को सबमिट करना है. ये जो पीडीएफ है उसको सबमिट करना है, न कि गधे जैसे वो वर्ड में डाल के दे देना. ऐसा नहीं करना है. ठीक है. नेक्स्ट थिंग व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू कम टू लाइन नंबर 372. अभी आपके साथ ऑथर्स कौन कौन है इस पेपर में, तो आप हो और आपके मिनी प्रोजेक्ट के गाइड है. ठीक है. तो इस केस में आपका नाम होगा लेट्स से ABC. You are not a member of IEEE. I hope you can just get rid of this thing. Okay, you are not a fellow of OSA. You can get rid of all these things. ठीक है. ABC, comma, and अभी सेकंड पर्सन का नाम जो कि आपका गाइड होगा. आपके केस में मैं ही हूँ. आई विल जस्ट पुट माय नेम. रिमेंबर, ये नाम जो होते हैं गाइड के या किसी के, आगे कोई सफिक्स नहीं लगाने का. प्रोफेसर, डॉक्टर ऐसे कुछ नहीं लिखते. So then you just recompile. You should see your name and your professor's name. Okay. Next thing you have to come to the line number. So you remember these line numbers. I hope they will change one or two lines up and down. So line number 360, line number 372. Okay. And next will be your abstract. So your abstract goes here, line number 433. Here you have to paste the abstract. ठीक है. एब्स्ट्रैक्ट जो भी लिखोगे उसका एक टेम्पलेट कल आपको दिया हुआ है, वेबसाइट पे भी है. सो कम टू द वेबसाइट and then I click on this thing. I will go to the courses and look for a course called mini project. So let me just do that. अब एब्स्ट्रैक्ट लिखने का सही तरीका क्या है कि फर्स्ट लाइन इज फॉर द जनरल ऑडियंस. मतलब आपकी घर में अगर कोई दादी है उनको समझ में आना चाहिए कि प्रोजेक्ट क्या है. ठीक है. और घर में कोई 3 साल का बच्चा है उसको समझ में आना चाहिए प्रोजेक्ट क्या है. तो ये होती है आपकी बेसिक इंट्रोडक्शन. वन लाइन everyone should understand. Next two lines is only for the electronics engineers, क्योंकि तुम्हारे फील्ड के जो साइंटिस्ट है उनको समझ में आनी चाहिए. So now you go into the detail. First line is one line summary, which is different from your title. Generalized language में होंगे.
ठीक है. Second line is for the electronics engineers in your case. Third line is problem statement. What problem statement you are trying to solve by doing this project? Generalize. Then you have to say how you are solving it. So methodology and what are the results we obtained. Now, since you are submitting this abstract before you construct your project, you should leave blank space, underscore, underscore accuracy. So you don't know the numbers, but you know we need to calculate something. Okay. So you have to leave the results with some blank number. You can write ABC percent accuracy. I don't care. So whatever you want to write, your result should be represented here. Then once you get your result, you have to give more context. So social relevance. ठीक है. मतलब तुमने जो किया उससे सोसाइटी को क्या बेनिफिट, और इस तरह से एब्स्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्ट करना होता है. तो 5 लाइन कौन से? पहला लाइन जनरल ऑडियंस, ठीक है. दूसरा लाइन जो है वो साइंटिस्ट इन योर फील्ड. तीसरा लाइन जो है वो मेथोडोलॉजी, तुमने क्या किया. चौथा लाइन जो है वो रिजल्ट्स, और लास्ट लाइन जो है वो है सोसाइटी के लिए ये प्रोजेक्ट का क्या बेनिफिट. आपको इस तरह से ये पूरा कंस्ट्रक्शन ऑफ द समरी पैराग्राफ या एब्स्ट्रैक्ट हमेशा करना है. दिस इज नॉट फॉर दिस पेपर. एनी डे इफ आई आस्क यू टू राइट अ एब्स्ट्रैक्ट of your work when you go to industry, this is how you should do it. Okay. With that, I will stop the recording and you start doing the Overleaf account and